Hello everyone, my name is Prince Charles and I once again welcome all of you in Bihar Teachers History Makers. मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th और 12th का सिलेबस बताऊंगा और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस महीने हम लोग कौन सा चैप्टर्स पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम एंड मच ऑफ माई टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लास 12th से मैं स्टार्ट करूंगा। So class 12th में 3 sections है, prose, poetry and third section is read, think and enjoy. So prose sections, poetry sections and read, think and enjoy. इसके अलावा हमारे पास grammar section है। grammar में हम लोग 5 चीज पढ़ेंगे। पहला tense, दूसरा active and passive voice, तीसरा direct and indirect speech, चौथा parts of speech और पांचवा models. These 5 things I will be covering. And in writing section I will be covering notice, informal and formal letter, that is application हो गया, and letter to your that is friend, father, mother, that is informal letter. उसके अलावा हम लोग report writing, notice writing, message writing, that we will see, and comprehension also, that is अपठित गद्यांश. So these things will cover up in this session. So let me tell you which month I will teach you what. This is the month of August. And in the month of August I will be covering these chapters. In prose I will be teaching Indian civilization and culture, Bharat is my home, A pinch of snuff and I have a dream. और इसी month poetry में हम लोग complete करेंगे sweetest love I did not go and song of myself. Clear? Next month, in the month of September, we will study from prose ideas that have helped mankind, the artist, a child is born, how free is the press. And in the month of same September में ही हम लोग poetry में पढ़ेंगे now the leaves are falling fast, to autumn, an epitaph, the soldier. In the month of October we will study the earth, India through traveler's eye, a marriage proposal. और poetry में हम लोग पढ़ेंगे Mactivity, the mystery cat, fire hymn, snake and my grandmother's house. So in November we will study from read, think and enjoy section first 4 chapters. Marriage is a private affair, the ice age cometh, teaching of English in India, a far cry from Africa. और दिसंबर में हम लोग पढ़ेंगे remaining 5 chapters, the grand beginning, a trick, cold wave, the martyrs memorial and preface to Bombay, London and New York. So till December we'll complete this book. Now in January what we will study? In January we will study writing sections and grammar sections. January में जितने भी grammar sections है इसमें tense, active and passive voice, direct and indirect speech, modal verbs and parts of speech. These things I will teach you, and also I will teach you writing sections, that is notice, informal and formal letter, message writing, report writing and comprehension, that is our Pathit Gadyans. So till January we will complete all these things. This is a blueprint of the syllabus. ये पूरे syllabus का ये picture है और February में मैं आप लोग को sample papers दूंगा जिससे board exams में आपको problems ना हो सके. So I will give you around 10 to 15 sample papers. So these things I have prepared for you class 12th. So this is a very good platform, Bihar Teachers History Makers, and let's try to work honestly. Now we will know about class 10th syllabus. So class 10th में मैंने आपके लिए prepare किया है जो इस तरह है. In the month of August we will study the pace for living, me and the ecology bit, Gillu and what is wrong with Indian film. In the month of September we will study acceptance speech, once upon a time, और हम लोग poetry भी touch करेंगे. Next month, God made the country, ode on solitude. In the month of October we will study the unity of Indian culture, little girls wiser than a man, polythene bag, thinner than a crescent, the empty heart. In the month of November we will study Koel, the sleeping potter and Martha. और नवंबर में हम लोग पूरा प्रोज और पोएट्री का एक बार रिवीजन भी करेंगे. In the month of December we'll complete Panorama, that is Reader Part 2. इसमें 7 chapters है. January night, allergy, the bed, quality, sun and moon, 2 horizons and love, defiled. So this will complete in the month of December.
In January we will study grammar and राइटिंग सेक्शंस। ग्रामर में हम जिस तरह मैंने 12th में कहा है सेम सिलेबस मैं 10th के लिए भी मैं फॉलो करूंगा, जिसमें हमारा टेंस रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके अलावा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मॉडल्स। एंड इन राइटिंग सेक्शंस वी विल हैव एज यूजुअल नोटिस, रिपोर्ट, पैराग्राफ राइटिंग, informal and formal letter, application writing and comprehension. And in February I will prepare sample papers for you all. So we'll keep it simple and straight. हम लोग सिंपल और स्ट्रेट रखेंगे हम लोग, और फरवरी में हम लोग सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे, और जब भी बोर्ड एग्जाम होगा अच्छे से जाके we will give a board exam and we'll try to get good marks. Not only good marks, we'll try to understand the contents and let's try to speak in English. This is a blueprint of class 10th as I told you about class 12th. ये पूरा सिलेबस है, अब मैं आपको स्पष्ट कर दिया है मैंने आपको कि 10th और 12th का जो चैप्टर से हम लोग इस तरह से इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं आपको क्लास 10th और 12th का जो मैंने बताया है सिलेबस में वो मैं स्टार्ट कर दूँ।